Good morning, girls. Welcome to Center Sula Girls High School and Junior College, Nagpur. We are in online teaching modules. Science and Technology, where we are learning Science 1 of Standard 9th. And our lesson is lesson number 4, Measurement of a Matter, which is the lesson of chemistry. हिंदी में द्रव्य का मापन. So let's go our today's topic, which is Avogadro's number. In the previous part of the video, we saw that 1 mole of something is nothing but 6.022 times 10 raised to 23 particles. It could be atom, molecule or anything. If I give you 1 mole of pure gold, then what will be the number of atom in be equal to? Yes, there is many atoms, and 1 mole of pure water will have this many molecules. But what is the scientific definition of mole? Scientifically, 1 mole is defined as the amount of substance that contain the same number of atom, molecule or particle as there are atom in 12 grams of carbon 12. Yes, let me break it down for you. Let me remove this definition. What we have on the screen now is 12 gram of carbon 12 is one of the isotopes of carbon. Now 12 grams of carbon is what was taken as a standard. So what's so special about this? Can you guess the number of atom here? Yes, 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. Now that you have understood, let me repeat the definition. 1 mole is defined as the amount of substance that contains same number of atom or molecule or particle as there are atom in 12 grams of carbon 12. It consists of two simple parts, same number of atom or molecular particles, atoms in 12 grams of carbon 12. So number of particle in 1 mole is equal to number of atom in 1 mole of C12. Many people get confused when it come to the concept of mole. Let's take many more examples. How about taking the same example, pure gold and pure water? When we say 1 mole of pure gold, then according to the mole it will have atoms in 12 gram of C12. That means 1 mole of gold will have 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. Similarly, water will also have the same number as the number of atom in 12 gram of carbon 12. That means 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water. Remember, the definition uses carbon 12 as standard. It is used as molecule or particle present in the substance. But what's the mystery? A scientist named Lorenzo Romano Amado came up with the concept. Yes, it is a very long name, so we will address him as Avagadro. So the number 6.022 into 10 raised to power 23 is Avogadro's number, which is represent the quantities, similar to how we use pair, dozen to represent 12. Similarly, Avogadro number is the term to represent this number, that is 6.022 into 10 raised to power 23. So can we go to a shop and say I want Avogadro's number of chocolates? Of course we can. The only problem is that the shop won't really have those many chocolates, and neither will we be able to carry them back home. So getting back to the concept, Avogadro's number is just another number used to represent quantities. But the number is so huge that using this in daily life is not practically possible and advisable. Then why does the number exist if we do not use it?
Yes, the number is commonly used in daily life by us. However, it comes to the rescue of chemists that work with atom, molecule, electrons and many such small entities. That is the reason why it is used to calculate 1 mole of any substance. Let's talk about one last concept. We know that 1 mole of carbon 12 is 12 gram of carbon 12. That's because 12 grams of carbon 12 has the Avogadro's number of atoms. Now let me ask you a question. If you answer this correctly, it means you have understood the concept of mole. What will be the mass of 1 mole of pure gold? Will it be 12 grams? Think about it. The answer is no, it will not be 12 grams. Note that in both cases the number of atoms is the same, but the mass of an atom is different from the mass of an atom of carbon 12. Hence the mass of 1 mole of gold is not equal to the 1 mole of carbon 12. 1 mole of gold 196.97 gram. That is because mass of gold atom is different from mass of carbon 12 atom. Similarly, 1 mole of water will have Avogadro number of molecules, but it will not weigh 12 grams. If we take 1 mole of water, we get answer 18.015 grams of water. And I'm sure you know why. For the sake of, if we take 1 mole of gold, 1 mole of silver and 1 mole of copper, all them will have the same mass, that is, and same atom, that is 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, which is the Avogadro number. However, the mass of each one is different. That make up this element is different. Mass of each will be different. तो आपने Avogadro नंबर के बारे में क्या समझा? किसी भी पदार्थ के एक मोल राशि में अणुओं की संख्या निश्चित होती है। इटालियन वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने इस संदर्भ में मूलभूत अनुसंधान किए, इसलिए इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं और इसे Na अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि एवोगैड्रो संख्या का मान 6.022 into 10 raised to power 23 होता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में उसके 6.022 into 10 raised to power 23 अणु होते हैं। जैसे एक दर्जन का अर्थ 12, एक शतक का अर्थ 100, एक ग्रोस का अर्थ 144, उसी प्रकार एक मोल का अर्थ कितना होता है? जी हाँ, 6.022 into 10 raised to power 23। उदाहरण के लिए एक मोल पानी अर्थात 18 ग्राम पानी लिया तो उसमें पानी के कितने मोल होंगे? 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु होंगे। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ CO2? सो इसे सॉल्व करने की मेथड क्या है? सबसे पहले हमें लिखना होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 विच इज 44। सूत्र हमारा बनेगा नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन CO2 स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ CO2 इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आपको दिया है मास 66 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हमको पता है कितना है 44। आप डिवाइड करेंगे इसको तो आपको आंसर मिलेगा n इज इक्वल टू 1.5 मोल। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल ऑफ CO2 consist of 6.022 into 10 raised to power 23 molecules। तो अब हमारी वैल्यू है
यानी कि 1.5 मोल CO2 कंटेन्स 1.5 इनटू करना पड़ेगा किससे, हमारे 1 मोल के वैल्यू से, जो कि होती है 6.022 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको आंसर मिलेगा 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड करने होते हैं मोल का यूज़ करके और एवोगैड्रो नंबर का यूज़ करके। पिछले पार्ट में भी हमने पढ़ा था, आज भी हमने देखा है 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 1 डजन बनानास मतलब होते हैं हमारे 12 बनानास। उसी तरह से 144 नोटबुक्स मेक 1 ग्रॉस ऑफ नोटबुक्स, राइट। और 1 मोल वाटर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। उसी तरह से 1 मोल कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट का जो एक कण होगा, दाना होगा, उसको कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सोचिए, 36 ग्राम पानी में पानी के कितने अणु होंगे। अभी हमने निकाला, उसी तरह से आपको निकालना है दैट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, और हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आर देयर इन अ 49 ग्राम ऑफ सैंपल। दोनों आपके लिए होम असाइनमेंट्स हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 52 पे हमने ये टॉपिक पढ़ा है, उसी पेज पर आप सबसे लास्ट में देखेंगे ऑलवेज रिमेंबर, हिंदी में इसे सदैव ध्यान में रखिए। यह पोर्शन से हटा दिया गया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, तो आप ये नोट डाउन करेंगे। पेज नंबर 52 ऑलवेज रिमेंबर पोर्शन में नहीं है। सो आज के लिए आपका होम असाइनमेंट है, आपको ये मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं मोल का यूज़ करके। इजी है, फॉर्मूला आपको पता है, हमने एक सॉल्व करके देखा है, उसी तरह से आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं। सो सी यू एट नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।